and then we will start. Close your eyes, inhale and exhale. Be grateful for this beautiful day, for this beautiful life, and all the visible, invisible helpers, beings, higher beings, our family, friends who are helping us to live this life well. Hands on your heart, smile on your face. To the Supreme God, to my spiritual teacher, to all the spiritual teachers, holy masters, holy angels, archangels, all the great, great ones. We humbly invoke you to bless us with your soothing, purifying, healing light. Let all of us be miraculously healed from all our sorrows and sufferings and be blessed with good health, with long life, quality life, with inner peace, joy, harmonious, loving, respectful relationship. Thank you for blessing our career, our prosperity. Let all of us be blessed with tremendous prosperity, abundance, and spirituality with thanks and in full faith. Thank you, God, for divinely protecting all of us. Thank you. Namaste, everyone. So, first of all, I would like to know how is your energy today? From 1 to 10, how is your energy? कैसी आपकी एनर्जी कैसी है? 1 से 10, 10 मतलब बहुत अच्छी है, 1 मतलब बहुत कम है. How is it? Okay, nice. Hmm. Do you think that energy is important? Hmm. How important it is? Hmm. It is important, right? Hmm. Because energy to a large extent is in our control. But what is not in our control? It's the time. Time is not completely in our control. Yes, we, to certain extent we can take care of it, but energy is something which is very important कि हम एनर्जी के बारे में समझे, उसे कैसे रेगुलेट करना है, उसकी कैसी मदद लेनी है. क्योंकि आप सबने देखा होगा जब आपकी एनर्जीज बहुत हाई होती है, when your energies are very high, generally your day is very productive. Have you observed that? How many of you observed that? फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, आप ज्यादा उसको लेट गो करना इजी हो जाता है. बट जिस दिन हमारा मूड खराब होता है उस दिन क्या होता है, रास्ते पे निकले किसी ने कुछ ज्यादा हॉर्न बजा दिया, कुछ कर दिया, डैश कर दिया, तो क्या होता है, हमारा सारा इरिटेशन बाहर आता है, राइट? We start going into negative things easily. Of course, we have both part of our personality where sometimes we are very optimistic, sometimes we are very positive, and sometimes we have those negative thoughts, we go through self doubt. But अगर आप देखोगे तो हमारी जब एनर्जी हाई होती है जनरली, और we are generally positive. Hmm. So it is said that everything is energy. According to physics, there is everything is energy, and that's all there it is. So we need to understand about this invisible yet incredible, powerful part of our life. Ki how energy works, what are the principles, what are the laws, and how we can use them to live a better life, to be more productive, how we can take our relationships well. क्योंकि आपकी एनर्जी जब हाई रहती है, आप देखो उस दिन आपके घर वाले, मतलब आपके बच्चे, फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर हैविंग किड्स, द डेज योर एनर्जीज आर हाई, बच्चे आपको कितना भी मस्ती करे, परेशान करे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. आपके पार्टनर्स आपको कुछ बोल दे, कुछ हो जाए, बट द डे व्हेन योर एनर्जीज आर नॉट गुड, यू गेट इरिटेटेड ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स. देखा है आपने, बहुत छोटी सी चीज पे चिढ़ जाते हैं और फिर हमें ध्यान आता है यार क्या इतना बोलने की जरूरत नहीं थी, आई शुड हैव हैंडल्ड इट इन अ डिफरेंट वे. सो energy is important. So there are basically, for our healing, for healing of our relationship, for healing our of prosperity, we require energy. Now for health, there are two basic laws on which the energy works. That is the principle of self recovery. Our body has the capacity to recover itself. दैट्स वाई वी गो डोंट गो टू अ डॉक्टर. आपने देखा हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. अगर छोटा मोटा कुछ हो गया तो हमारे बॉडी को पता है उसको कैसे हील करना है. बट हील करने के लिए क्या लगता है उसको, देयर कम्स द सेकेंड लॉ ऑफ एनर्जी, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फोर्स. हीलिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ द लाइफ फोर्स. एक्चुअली अगर आप देखोगे आप में और फिर मुर्दा शरीर में फर्क क्या है, तो दैट इज एनर्जी. what they don't have, you and they have the same thing. जो आप फिजिकल बॉडी ऐसे देख सकते हो, भौतिक शरीर, आप उनकी भी फिजिकल बॉडी देख सकते हो. सो क्या क्या गायब है उनमें? हम कहते हैं ना प्राण हर गए, रूह चले गई. दैट इज द लाइफ फोर्स, दैट इज द एनर्जी.
Prana is the life force. Without it, the body dies. This is what our teacher, Master Chokoksi, says. So, by increasing the life force, we can help the person to recover themselves. कई बार जब हमारे पास कपल्स आते हैं, दोज हु आर गोइंग थ्रू अ रफ रफ टाइम, डिफिकल्ट टाइम से जाते हैं, सो कई बार ऐसा देखा कि दोनों की भी एनर्जी लो होती है, जिस वजह से उनके फाइट ज्यादा होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है, मिसकम्युनिकेशन ज्यादा होता है, एंड सेम गोज विथ योर हेल्थ एवरीथिंग। एज आई सेड, आप देखिए बच्चे कौन जल्दी ठीक होता है, कुछ हो गया तो बच्चे जल्दी ठीक होते हैं, वही अगर बुजुर्ग को अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उनको वक्त लगता है, बट बच्चों को हुआ तो जल्दी ठीक होता है, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी। सो बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी लेवल, आप खुद की जो कैपेसिटी है शरीर की खुद को ठीक करने की, वो बढ़ा सकते हो। बाय इंक्रीजिंग योर एनर्जी लेवल्स, यू कैन मैनेज योर रिलेशनशिप्स वेल। सो व्हाट आर द टू बेसिक लॉज ऑन विच healing is dependent? That is the principle, the law of self recovery and the law of life energy. Hmm. Your physical health depends on your energy body. Now health generally we look at from the physical perspective, क्योंकि जनरली हमको बचपन से वही बताया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वही सब कुछ है। हम खाना खाए ठीक से, एक्सरसाइज करें, सोए ठीक से, दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट एंड हेल्पिंग आवर फिजिकल बॉडी, बट इक्वली अपार्ट फ्रॉम फिजिकल बॉडी वी ऑल हैव एनर्जी बॉडी। जैसे हम भगवान को देखते हैं, उनके आजू बाजू वलय दिखाया जाता है, राइट? लाइक दैट वी ऑल हैव टू बॉडीज, एंड साइंस बिलीव देर आर सर्टन कैमराज थ्रू विच वी कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस एनर्जी बॉडी। सो जितना ख्याल हम हमारे फिजिकल बॉडी का रखते हैं, भौतिक शरीर का रखते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है हम लोग हमारे एनर्जी बॉडी का ख्याल रखें। आपकी एनर्जी बॉडी ठीक रहेगी तो एज आई सेड, योर कैपेसिटी ऑफ फिजिकल बॉडी टू रिकवर इटसेल्फ विल बी बेटर। हमारे एनर्जी बॉडी में हमारे चक्रास होते हैं, चक्रास का काम होता है एनर्जी लेना, डाइजेस्ट करना और दूषित ऊर्जा को एक्सपेल करना। सो बाय गिविंग द एनर्जी, योर फ्रीक्वेंसीज आर बेटर। आप डू यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट? हम लोग एनर्जी का एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग कई सारी बातें एनर्जी के बारे में कर रहे हैं। सो जस्ट प्रेस योर पाम्स, पाम सेंटर प्रेस कीजिए, आपके फिंगर टिप्स, स्ट्रेच रिलैक्स, फील द एनर्जीज, एनर्जी को फील। इस तरह रखिए हाथ, आंखें बंद कीजिए, इनहेल स्लोली, होल्ड, एक्सहेल स्लोली, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। कीप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, लंबी गहरी सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, और साथ ही साथ अपने हाथों को पीछे ले जाए, पास ले आए। Move your hands back and forth. Feel the energy between your hands. Mentally say, I can feel, I can feel, I can feel. मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है। Now gently rotate your hands. हाथों को धीरे धीरे गोल घुमाइए। Keep your eyes closed. आंखें बंद रखें. Just feel this energy. See what do you feel between your hands. Then in reverse direction. विरुद्ध दिशा में घुमाएं। Okay. We can feel energy, right? How many of you can feel the energy? There is something, some pressure, ball, something is there. Right? We can feel. Now let's see. जैसे हमने कहा कि हमारे इमोशंस हमारे एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, हमारे वर्ड्स अफेक्ट करते हैं, हमारे थॉट्स अफेक्ट करते हैं, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग आवर एनर्जीज। सो करते हैं कि नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो अगेन कीप योर हैंड्स लाइक दिस, हाथों को फिर इस तरह रखें, कीप मूविंग, फील द एनर्जी। Okay, so I'm happy, I'm healthy, I'm wealthy, I'm wise, I'm grateful, I'm joyful, I'm graceful, I'm a blessed child of God. Everything is happening at the right time, in a right way with me. Can you feel what's happening to your energy? How many of you can feel the energy is increasing? थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। यू कैन फील, राइट? ऊर्जा बढ़ रही है। कितने देर हमने बोला? हार्डली अ मिनट वी सेड दिस, राइट? नाउ से, आई एम वेरी अपसेट, वेरी एंग्री, वेरी इरिटेटेड, today was the worst day of my life, nothing is happening right. See what's happening to your energy. Can you feel it's collapsing? ऊर्जा कम हो गई? Yes, you can feel, right?
हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमारे एनर्जी का ख्याल रखे, हमारे इमोशंस का ख्याल रखे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कई दिनों तक नेगेटिव रहोगे, और जस्ट लुक एट द डे, आज का दिन आप देखिए, क्लोज योर आईज, जस्ट ऑब्जर्व हाउ वॉज योर डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाउ। हाउ वॉज योर मूड व्हेन यू गॉट अप? You are happy or irritated? What all you did in first half of the day? 12 बजे तक क्या क्या किया? Just ask yourself, how was my energy? Then in afternoon, how was my energy? In evening till now, from 5 o'clock till now, how was my energy? How were my thoughts? Were they positive, neutral, or negative? Okay, gently open your eyes. It is very important that we are aware of what's going on in a day. अदरवाइज क्या होगा, एक दिन खत्म हुआ, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पता ही नहीं चलेगा लाइफ कब चले गई। कितने लोग को लगता है 2025 अभी स्टार्ट हुआ तो अभी खत्म हो गया? नॉट खत्म हो गया, बट इट्स लाइक वी आर ऑलरेडी इन मे, जून, नेक्स्ट मंथ इट विल बी हाफ ईयर ऑफ द। सो कई बार होता है ऐसे कि अगर आप इफ योर एनर्जीज आर हाई एंड यू आर पॉजिटिव, आपका टाइम बहुत फास्ट जाएगा, and when you are negative it will go very slow. It is important to take charge of our thoughts, emotion, words and action, because they are all equally contributing to our energy. सब एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रोज हमारे दिन का अवेयरनेस एक रिफ्लेक्शन करें कि हमारा मूड कैसा था, एंड देन आइडेंटिफाई आफ्टर बीइंग अवेयर, आपको पता चल गया आपका एनर्जी कैसे था, फिर आप क्या करोगे? यू विल add certain activities in your day which can improve your energy level. For that you need to check आप आपके कौन से चीजें करने से आपकी एनर्जी बढ़ती है, किन लोगों से बात करने से एनर्जी बढ़ती है, एंड ट्राई टू ब्रिंग दोज कंपोनेंट्स इन योर लाइफ. नाउ फॉर मी पर्सनली, yoga brings lot of joy and energy for me. It brings lot of calmness. Physical health, this is all different, but that is one thing it helps me. Dancing with my kids, spending some good quality with them increases my energy. Then my work gives me a lot of energy. Like this session gives me energy, actually you are giving me energy. Then gratitude practice, every day I write down 10 things I'm grateful to, that increases my energy level. Meditation increases my level. Pranayam, so I make sure that twice a day at least I do my breathing exercises. Movement, your physical movement is going to bring lot of energy. Your food, your water is bringing lot of energy in your life. So you need to check and keep adding things which are increasing your energy level. और जो चीजों से आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, वो चीजों को हमें हमारे लाइफ से कम करना है. कंप्लीटली शायद इमीडिएटली आप गायब नहीं कर पाओगे, बट इट इज पॉसिबल दैट यू कैन डू. सो कौन सी चीज है जिससे आपकी एनर्जी कम होती है और कौन सी चीज है जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती है? I want you all to make two columns. If you can do it right now, if you have paper and pen, energy enhancer and energy deplete किससे हो रही है आपकी, ये आप दो कॉलम बनाओगे और लिख के निकालोगे कि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं आएगा आप वो चीजों को इंप्रूव नहीं कर सकते हो. सो एट फिजिकल लेवल, व्हाट आर द थिंग्स विच आर डिप्लीटिंग योर एनर्जी लेवल्स? ओवर ईटिंग, जंक फूड, sitting on one place continuously, talking to people who pulls your energy down, thinking about them, thinking, being in past, इसने मुझे ये कहा, उसने वो किया, at emotional level, thinking of people who are not helping you, और स्पेशली पीपल हु हेल्प यू, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली, दे आर वेरी लविंग एंड काइंड, बट उनके बारे में नेगेटिव सोचते ना कि उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं. इट इज डिप्लीटिंग आवर एनर्जी, राइट? स्पेशली बीइंग इन द पास्ट. सो यू, आप लिख के निकालो. जैसे मैं कुछ चीजें आपको बता रही हूँ, बट आपको लिख के निकालना है. गेटिंग बीज इन रिस्पॉन्डिंग टू अदर पीपल, प्रूविंग योर सेल्फ राइट. समटाइम्स वी गेट कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और उस चक्कर में हम लोग हमारी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं. वॉचिंग टू मच इंस्टा और योर गेम्स, उससे एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? आपकी बढ़ रही है तो देखिए, कम हो रही है तो. कई बार होता है ना, जस्ट माइंडलेसली वी कीप ब्राउजिंग ब्राउजिंग ब्राउजिंग, दैट इज नॉट हेल्पिंग योर एनर्जीज.
सो कौन सी चीजें हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती है? सो देन मेक अ लिस्ट, एंड देन आई वॉन्ट यू ऑल to write one thing you will do, at least one thing every day at physical level. Health के लिए आप क्या कर सकते हो? Like intake of 3 liters of a water, it's amazing. So just have 3 bottles, water bottles full of water, like पानी भर के, and make sure that in the entire day you are finishing those 3 bottles of water. And then food fruits can help you to increase your energy level. देन ईटिंग राइट थिंग्स एट राइट टाइम. आपको जंक फूड है पसंद है, ठीक है खा लिया, बट उसके साथ क्या आप कैन यू कीप योर सेल्फ अ टारगेट कि ओके इफ आई वांट टू हैव अ पिज्जा और इफ आई वांट टू हैव अ स्वीट और समथिंग, आई विल ईट समथिंग हेल्दी लाइक दैट. यू नीड टू, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली आप उसको जो चीजें आपको पसंद है बट जिससे आपकी एनर्जी कम होती है उसको निकाल दो, बट यू नीड टू सी समटाइम्स फ्यू थिंग्स गिव अस प्लेजर एट दैट टाइम, बट इवेंचुअली दे आर पुलिंग आवर एनर्जीज डाउन. फॉर एग्जाम्पल गॉसिपिंग. गॉसिपिंग में क्या होता है? जब हम नेगेटिव बात करते हैं किसी के बारे में, इट इज पुलिंग आवर एनर्जी डाउन. उस टाइम पे हमें बड़ा अच्छा लगता है लोगों के बारे में नेगेटिव बात करना. इट it feels good to your ego that you someone is doing wrong thing. It's a gossiping, but it's not good. At the long term, it's depleting your energy levels. Sleeping too much or not sleeping, these are all decreasing your energy level. So something which increases your energy level at physical, like physical things, like जैसे food, पानी हो गया हमने कहा आपको, then आपका sleep, proper rest, that can help you. So what is that one habit you can do every day to improve your physical health? वन हैबिट जो आपको पता है बट शायद इतने में आप फॉलो नहीं कर रहे हो. इट कैन बी ड्राई फ्रूट्स, इट कैन बी फ्रूट्स, इट कैन बी ईटिंग ऑन टाइम्स, एनीथिंग. One thing you can do it weekly, maybe fasting or something like that. What you can do at physical level, emotional level, आप क्या कर सकते हैं एक चीज रोज? Like for me, as I said, gratitude practice that helps me at emotional level. आपको के लिए कौन सी चीज है? Emotionally, dancing makes you feel good. Just play a song and dance. Play a bhajan and dance. Whatever feels good. Emotionally, what you can do to improve your emotional state. Mental state. How you can improve your mental state? Maybe reading something nice. Attending session like this. This is like a food for our mental body. So what you can do every day and weekly then? I want you to come up with at least 4 new things which you will start doing, and they should not be very long. Just 2 minutes, 3 minutes. That's it. आपको ऐसे बड़े बड़े प्रोमिस खुद को भी नहीं करने जिसको आप फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है कई बार जब हम सोचते हैं वो चीज हम नहीं करते, दैट ऑल्सो डिप्लीट्स आवर एनर्जी लेवल्स. सो आई वॉन्ट यू टू जस्ट डू इट फॉर अ मिनट. फॉर एग्जाम्पल ग्रेटिट्यूड यू हैव रिटन, डांस यू हैव रिटन, आई वॉन्ट यू टू जस्ट डू इट फॉर 1 or 2 minutes, max 2 minutes for next 7 days. सो व्हेन यू विल डू दैट, एंड व्हाट हैपेंस जब हम कोई चीज कमिट करते हैं वो कंप्लीट करते हैं, वी फील गुड, राइट? दैट इंक्रीजेस आवर एनर्जी लेवल. आई डोंट वांट टू गिव लॉन्ग कमिटमेंट्स. ओके. स्पिरिचुअली व्हाट यू कैन डू, वीकली में भी एक बार मंदिर जा सकते हो, मे बी प्रे कर सकते हो, भगवान के पास जाके नमस्ते कर सकते हो. आई डोंट नो, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. Invocation, starting your day with an invocation, ending your day with a thanksgiving, 2 minute meditation if you can't do long meditation, something which you can improve. जैसे हमारे मोबाइल को चार्जिंग लगता है, हम सब भगवान के घर से आए, तो भगवान से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है यूनिवर्सल पावर से. सो हाउ यू कैन, व्हाट यू कैन डू to improve your divine energy, universal energy, or something like that, whatever, if you believe in God or not. So this all helps. Avoid energy drainers and improve your energy enhancer. So energy drainers क्या है, energy enhancer क्या है, ये दो जब चीजें आप लिखना शुरू करोगे, and when you will get busy in energy drainers, automatically consciously आपको ध्यान में आएगा अरे इससे तो मेरी एनर्जी कम हो रही है, and it will eventually happen that you will stop doing those things. एंड एनर्जी इनहांसर, जिससे एनर्जी आपकी बढ़ रही है, जब वो ध्यान में आएगा किस चीज से बढ़ रही है, जस्ट स्टार्ट एडिंग दोज थिंग्स इन योर डे टू डे लाइफ. Make sure that your energies are high. And in these sessions, we'll keep giving you different tips and tricks how you can improve your energy levels. Okay. For today, this is your assignment: energy enhancer, energy drainers. Write down, make a list, and then next action is what you can do to improve your energy level. Okay. Thank you so much. Now we are going to listen to amazing feedbacks from our pranic healers.
I hope you all know. I missed to introduce myself. Myself, Leena Khanke. I am from Pune. I am into Pranic Healing School, an amazing energy science school developed by a teacher, Grandmaster Chok Oksui. So I'm practicing it from 2008, and I've seen many lives getting transformed. So, and at all the levels, actually, physical, emotional, mental, financial, and spiritual. So I have requested few our pranic healers to share their journey and their story about it. Okay, so I hope you are excited. Just type yes in the chat if you are excited to listen to these amazing stories. Hmm. Yeah, you can raise your hands or just type yes. Great. So we are going to request Akshara first to share her part. Thank you, Akshara, for accepting this. Uh, Let me give you permission. Yeah. Can you just unmute yourself? Yeah, am I audible? Yes, yes, you are. Yes. So, Atma Namaste everyone. I am Akshara Padke. I'm from Mumbai and I started my pranic healing journey from 2024. And I have done basic pranic healing session. And I really wish that I could do advanced pranic healing because it has helped my life and it has not only helped me but as well my loved ones. And I would like to share my experience that how it has been a transforming journey in myself. So basically, I am someone who had epilepsy from the age of 2, and it had increased very much in my MBA. In every 6 months, in every week, I was getting feeds, and the day I joined Pranic Healing was suggested to me by a healer, and she was healing me, and that's how I gained trust on Pranic Healing. So after learning basic Pranic Healing, I healed myself. I started healing myself, and that has shown tremendous change in me. The after effects of epilepsy were that I was not able to go outside my house without any anxiety. But once I started healing myself, I could feel a balanced self. I could control my emotions, and as well now I can step out of the house. Right now only I had went to Konkan for 4 days without any anxiety, and I enjoyed there fully because now it is the thing that I challenge my brain that if you're giving me challenges, I will be the first one to overcome it only because of healing. And also, I would like to share an experience of my loved one that she had a burning experience and she had got burns. So I had healed her. She was in Canada. I am in India, and that she was feeling cooling effect instantly. So I would recommend healing to everyone who is present over here. And as well, I had done it to my friend. She was in Pune. She was not getting periods from last 5 months, but as soon as I started healing her, I started motivating that you believe, you manifest. Then she got her periods in just 2 days after healing. Thank you so much. That's super awesome, Akshara. Just with basic pranic healing, you are producing these great results. It's been how many months? Unmute. You need to unmute yourself again. Yeah. I had taken the pranic healing course around October 2024. October. Wow. Superb. Congratulations. Very proud of you, dear. Because learning is one thing and implementing is another thing. And you're not just helping yourself, but your loved ones and friends also. And distance healing, guys, we can do distance healing in pranic healing. I think that's the biggest blessing we have because when there are problems, many a times we sit and we cry and we think what I can do. But when you're a pranic healer, you have something to do. You can do something and you can surely help. Thank you so much, Akshara, for sharing. So I will request now Gaurav Gokte to share his experience. Unmute yourself, Gaurav. Try again. Yeah, yep. Yeah, am I audible, ma'am? Yes, yes, yes. Yeah, Go ahead. thank you, Lina ma'am, for this opportunity to share my experiences. This is Gaurav Gokte. I'm an engineer and physics teacher by profession, and I came into pranic healing about 1.5 to close to 2 years now, and it's been really fantastic time 1.5 and 2 years. बहुत अच्छा एक time है मिला है. I've gained like
amazing levels of knowledge, which is very difficult to share in like 3, 4, 5 minutes. It is difficult to share what kind of knowledge, the kind of depth we have gained in these many months. I've done about 7 courses till now: basic, advanced, psychotherapy, crystal healing, psychic self defense, soul class, and of course, Aratic Yoga preparatory. So, all the courses, all the teachers, it has been amazing journey till now. And I consider myself still काफी नया हूँ मैं इसमें, but I'll share 2, 3 experiences जो healing के experiences है मेरे. So one experience I'm sorry, one experience I'll share, which is quite recent, जो अभी 2 महीने पहले. One family friend, he was a chain smoker almost, and he used to carry a pack of cigarettes, and he said कि कुछ कर सकते हैं क्या. So मैंने बोला कि psychotherapy में it is possible to heal addictions, and we started, and in about 6 to 8 healings he is now practically smoke free. So that is one of the most incredible results I've got till now. So Wow. ये काफी बड़ा एक रिजल्ट था. एंड ऑफ कोर्स इट हैज हेल्प माई सेल्फ एंड फैमिली नंबर ऑफ टाइम्स. लेकिन एक थोड़ा सा फनी, नॉट इट्स नॉट फनी, लेकिन एक और एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं. अ कपल ऑफ मंथ्स बैक माय फ्रेंड कॉल्ड मी, ही सेड कि मैं बेंगलोर में हूँ, एंड आई एम टेरिबल एसिडिटी हुआ है, आई विल वॉमिट एनी टाइम, ऐसा मेरा सिचुएशन है. सो जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि वॉमिट होने से पहले क्या कंडीशन होती है इंसान की, ट्रैवल कर रहे हैं, टैक्सी में बैठा है, एंड ही somehow he thought of me and asked me कि भाई तू कुछ कर सकता है तो देख अभी कुछ कर दे. And I immediately sat for healing. I worked on his digestive system, and within probably 20 to 30 minutes he called me back. भाई ये क्या हो रहा है, I'm completely okay, headache is gone, my vomiting sensation has gone completely. He was practically laughing on my phone call. So that was like, सब बहुत अच्छा experience था, of course, ये. And there are a number of experiences, but I'll share one more, and then maybe pass on to somebody else. Uh, one of my relatives, one of my cousins, she had chikungunya, and terrible joint pains the बाद में. She couldn't get up. Like it took literally like a minute for her to get up from a chair, and her hand couldn't go even इसके ऊपर हाथ जा नहीं रहा था, shoulder. And I said, let me try. ये मैं प्राणी हीलिंग में एक करता हूँ, एक सेशन करके देखते हैं. And within 30 to 45 minutes she could take her hand to, मतलब कान को टच हो रहा था हाथ, and within like less than probably 40 minutes or so. So just Wow. one session and she could do that. So काफी वो रिलेटिव सारे एकदम zap हो गए कि ये क्या हो रहा है, and then I try to explain everybody कि how this works, and it is definitely helpful. So I'll definitely recommend कि जिन्होंने नहीं किया है वो लोग सीखें, एंड टेक एक्सपीरियंस ऑन योर ओन. जब आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. Definitely recommended. And thanks to Lina madam, thanks to Vijay sir, and all the teachers who have like जिनकी गाइडेंस से यहाँ तक पहुंचे हैं, and still learning, and trying to learn new techniques of healing, उसमें और ज्यादा कर रहे हैं. So yeah, thank you. Yeah, thank you so much, Gaurav. That's Yeah. awesome. आपको as a engineer, how was it to first you immediately believed on pranic healing or you had your inhibitions? Actually, initially inhibition नहीं था, Hmm. because my parent got cured. Actually, that was first Okay, very can very you incredible share result. that story? एक्चुअली उनको न्यूरalgia, ट्राइजेमिनल न्यूरalgia था, which is considered one of the highest pains ever which can happen to humans, and काफी बहुत ज्यादा उनको पेन हो रहा था. एंड नो एलोपैथी और होम्योपैथी काफी ट्राई करके हो चुका था फॉर मंथ्स, एंड इट वाज नॉट, कम नहीं हो रहा Yes. था. Hmm. एंड देन वन ऑफ माय सीनियर प्राणिक हीलर है फ्रॉम थाने, तो उन्होंने मुझे, ही गॉट, मतलब somehow he came in touch with me and he said कि ऐसा ऐसा कुछ है प्राणिक हीलिंग. आई एम अ प्राणिक हीलर. कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या है. एंड वी sat one day and he showed me this energy feeling technique, and I said, Hmm. what's happening? I can actually feel something. And I came home, told my parents कि ऐसा ऐसा हो रहा है, shall we try that? वो बोले कि they were very open, वो बोले चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है. And within 1 or 2 sessions the pain was practically gone, which couldn't be cured by allopathy for 6 months. And so that was like first experience which got us into कि भाई ये कुछ तो है and we should look for it. And then फिर थोड़ा साइंटिफिक, मतलब साइंस और इंजीनियर का दिमाग चलने चालू हो गया कि ये कैसे वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है. बट आफ्टर 1.5, 2 years now, I think कि साइंस इज वेरी वेरी डीप टू अंडरस्टैंड दैट कि ये क्यों वर्क हो रहा है एनर्जी के टर्म्स में, फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू.
it will need I don't know how many years of study कि वो समझेगा. But for a long time I was believing it totally because I could see the results. But scientific explanation मिलना मुश्किल हो रहा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था. बट आई कुड क्लियरली सी कि दिस इज वर्किंग एंड ये तो हो रहा है एंड ऑल दैट. एंड बाद में आई स्टार्टेड थोड़ा सा उल्टा होने लगा कि ये तो एनर्जी वर्क हो रहा है तो मैं फिजिक्स क्यों पढूं. उल्टा भी थोड़ा हुआ है फॉर सम टाइम. बट नाउ आफ्टर लाइक टॉकिंग टू ऑल द एक्सपीरियंस हीलर्स, ऑल द टीचर्स, नाउ आई नो कि इट कैन बी अ गुड कॉम्बिनेशन. साइंस एंड ये तो दोनों का कनेक्शन मिलना बनाना, दैट कुड बी समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. And but incredible levels of knowledge. Theosophy, what we are learning now is like another level, completely different. इतना पता नहीं था पहले कभी, but because of प्राणिक healing got introduced to theosophy. And जो books पढ़ रहे हैं जो अलग अलग. So yeah, but I think it's somewhat long way to go thinking Yeah. about scientific and theosophy terms. So Great. yeah, Thank you. yeah, Thank you so much, Gaurav. Thank you. yeah, Amazing yeah. experience. Most His welcome. entire family is pranic healers now. His dad, mom, brother, Gaurav, very sincere pranic healer, very diligent practitioner. Along with his work, he's able to do his healing, and now he's opted for ACPH, doing his associate certified pranic healing course. So there, you need to do healing, submit cases, give exam, and then you get certified that you are a skilled healer. So that all the best, Gaurav, for that, and thank you so much. Nice talking to you. Thank you. So next, I will invite Shreyas, our young, one of the youngest pranic healers. Yes, Shreyas. Unmute yourself. Hello, ma'am. Hello, everyone. Atma Hello. Namaste. Atma Namaste. Thank you so much, ma'am. So, pranic healing is a magic. It's a magic that happens to everyone. It has the power to transform lives. I started my pranic healing journey when I was in 11th class. I just turned 16 and I did my basic with Vijay sir, then advanced with Leena ma'am, then my psychotherapy, then my crystal soul class, and I recently did my psychic self-defense. And now I'm planning to do my AY either in this month or the next month as the time permits. So pranic healing has helped me tremendously. Special credit goes to Twin Hearts Meditation. It has done a magic to me. It has helped me in all aspects of my life, whether personal life, whether emotional, whether academic life. It has always played an integral part. Whenever I go for an exam, whenever I have some important event, some important session where I have to be really, really active and enthusiastic, I make sure that I do my THM. Or if time is not there, I make sure that during the entire traveling part or whenever I'm getting ready, THM is being played. So that gives me a lot of energy. It gives me a very good boost, confidence to perform exceptionally well. It has helped me tremendously in my exams. I mean, I know how to what extent it has helped me. ठीक है. My parents are also pranic healers, so they always support me with healing energies whenever I need it. And specifically, when I'm at my low, when I'm either stressed, upset, healing is what I need. So it has become the way of my life. Right now I do have a goal to be more consistent with my THM, and definitely AY is in the plan. Affirmations by master, the basic fundamentals, the seven principles, those have also helped me a lot to be on the right path. Talking about my experiences, I'll share a recent experience. So we had our 10th CBSE maths exam on 10th of March. So I mentored a student for the same, and during the exam, I had a intuition ki something is not right because the paper was very tough this time. It was something different from what usually comes. So I just did blessing for them. I did great invocation for her. And when I got a call from, she did something in the middle happened. I was getting ki you are sitting beside me or helping me with the answers, and that changed my belief altogether. She scored like 37 in her pre-boards, so she was not able to cope. And in the final exam, the result just came. She scored an 86. That was a very big, lesson for me. Wow. Wow. Super. And secondly, how pranic healing has specifically helped me. So during September, I was seeking from master that I could get some students to mentor. I wanted to start my own coaching because I love teaching. That's my passion.
I even said to Lena ma'am that, once I'm done with all my academic plans, I'll definitely aim to be, get into teaching into pranic healing also. So within a month, I got a call and I got the opportunity to mentor all the college students. So I have mentored them for their entrance exams. So that has also, become a very big thing in my life. And whenever I do blessings for them, whenever I ask them, you just bless, trust the process, things happen beautifully at their end. They achieve their results. Everything happens so powerfully. Even I started THM in my school. I asked a few of my teachers to do THM. I did that immediately. I did my basic, and even they were surprised with the after effects. In our school, used to do meditation regularly, but when they did THM, they felt a very big difference, because THM, as it is a guided meditation, it really helps you at all levels, and specifically when you chant Om, when you focus, and when you bless the earth. So those blessings come back to you in a very big form. So it really helped them, and some of the teachers that time were facing some issues. So okay, the light has gone, so they were facing some issues, and it immediately cured it. They immediately got their answers. So pranic healing has helped me tremendously, all thanks to Lena ma'am, Vijay sir, who helped me make my foot into it, who helped me believe it, because it was with them I started. And even today, whenever Lena ma'am does a meditation, I make sure ki I do it with her, because the healing energy is tremendous. It's powerful. Thank you so much. Thank you so much, Shreyas. I'm amazed with all your experiences, and thank you for uh, being a great student, not only learning but sharing this with others. This is really superb. Thank you so much. Grateful and proud of you. Now, okay. Now we have another healer. So, how is it going, guys? We are listening to some amazing stories. Just let me know in the chat. How are you feeling? Pranic healers, are you excited to apply what you are learning? जैसे श्रेयस ने कहा, he just did it when he was just like turned 16 and he did the course and he's applying so well. Gaurav, you saw he's already is in profession. Then Akshara, she was also a student. So different age groups from different backgrounds applying this knowledge in a different way. Everyone will have lot of story. But today I have requested to keep it in very short. But it's all inspiring, right? So let me invite Raji now. Yes. Unmute yourself. Yeah. Hi everyone, Namaste. I'm Raji. I'm an IT professional. So my journey started less than a year before. Last June is when I actually got into pranic healing. Mid of June is when I did it, and it has been less than a year. But um, I'll just tell before I started how I came into it. So I was having something called IBS, irritable bowel syndrome, or some doctors say it is colitis. There is no proper name, and in allopathy does not help this really much. I was under medications, changed doctor thrice already, not helping much. Even this is the second time I got it, but 6, 7 years back I got it. Before that, medicine also did not work now. So that created some complexity in my case, and we tried with some new medicines and all. It was not going great, and I almost stopped going out of my house, and I have taken sabbatical from my work also. Was not going to work. So I heard about pranic healing, and I was not into any. I for the first time probably that's the first time I heard. So somehow it. I was so desperate that I thought, okay, let me do this and try it out. Before I entered the class, or before I joined the class, in fact, I called Prana Life and I asked, like, I'm not sure I would be able to sit for 2 days, because I was not really going out of my house. They said, no problem, you come. We have healers here. In case if it is needed, they would heal you also. But then I went in. Some difficulty was there first 2 days when I sat, but that's when it's from day one it started.
I came in, I started healing myself. I felt better. Even in the next 2, 3 days, I started getting better. I felt joyful after a long time. In fact, my energy levels started going up. Um, Immediately after the immediate next week, Lena ma'am said, suggested go for advanced course because you need advanced healing. It's like advanced course is going to a specialist doctor. If you have any ortho issues or you have any GA issues or you have anything specific kind of issues, it is better to do advanced. So back to back I did, and finishing advanced course, I started healing myself using the proper GA protocols, what is mentioned in the book. And it is not like you would get improvements after 1 month of taking medicines and things like that. Even daily when you do it, you can see the improvement with the healing. So that makes us do more healings and get better very well. So not just for me, even within after the month or so, I did psychotherapy because I was so down with my lower emotions also. So it's like do the healing from both. It's like going to a counselor as well as a doctor and taking medicines for both of it, right? It's that kind of thing. So from where I was in last June, whether I can go sit for basic class, uh, now I go do, in fact, go and do healings for others in the healing camps. I tell this as a story to even for them to take the step of learning pranic healing, that I can stand for days and then do healings now. Though I'm not a professional healer, I do mainly for the family. It has really immensely helped me out. So along with this, I started regularly doing my Twin Hearts meditation also. So that changed not just healing from uh, my perspective. It changed the relationship with my family members as well. I have become more calm, more peaceful these days. And in fact, somebody is getting tensed, I say that, calm down, we can work it out and stuff like that. So since distant healing is also possible, you don't have to have the person in front of you to heal it. So my daughter works outside the city. So if previously when she calls up saying that I'm having fever or anything, I immediately panic. Immediately panic. I'm that kind of person. Now I just do the healing. It's something that you don't have to run to doctor or you don't have to panic. You have something, you sit for half an hour. Like previously fellow healers told that half an hour or 1 hour, it makes a big difference. You don't have to even the time you sit and find a doctor, which doctor to go and when to get an appointment. By the time you could have been done with the healing and the person would already feel better. Amazing, no? So that's what keeps me going. And my life has transformed absolutely 100%. I can say 200%, and it is still going on. It doesn't stop with that. We are learning new things, new practices. Along with meditations, we do forgiveness, gratefulness, prayers, and stuff like that. The best part of meditations is you get the divine energy and you do the blessings. So it is like we do the blessings for ourselves. And I've seen many of my whatever we blessed for have happened in my life. And it has been really miraculous. If I had more time, I would love to go over all of those things, but believe me, it really works. Thank you so much, Lena ma'am, for this opportunity. Thank you so much, Raji. I remember the first day you came, and that time, how was you? And now you're Yeah. amazing. Massive action taker, the way you have worked on yourself. You didn't allow your problems to take over you, but you were focused on solution. So it's not easy what you have gone through for like long time, but it's very inspiring for me, for everyone, I think here, that yes, don't focus on problem, focus on solution, and God will surely help you in some or other way. And especially pranic healing, it's not only you just didn't heal yourself, you're helping so many people. I can see that spark in you. So whenever she comes for pranic healing camps, she makes sure that she's making everyone sit, and then she talks to them and make sure that they explore pranic healing. It's so important. So those who have not yet gone for this, I will just request that try it.
Why not? We go to different restaurant, we buy different stuff, we buy mobile. At so many places we do the investment. Why not to invest on our health? Hmm. And something which you will always have. You don't need to depend completely on doctors, especially for simple things. Yeah. For major, we suggest that you take care of, consult a doctor and take the medicine. Along with that, do the healing. But there are certain cases like Rajesh shared that IBS, it's very difficult to go through that problem. And now she was like, we were in ashram for last 4 days, and she did her retreat, everything. Like she's full on now. So thank you so much, dear. Thank you. Thank you Thank so you. much, ma'am. Bye. So who would like to go next? Yes, संगीता जी, आप बोलेंगे नेक्स्ट जी. सो अनम्यूट कीजिए. ट्राई अगेन. फिर से एक बार ट्राई कीजिए. नहीं हुआ. जी हाँ. She is one more inspiring soul. I see her in all sessions, all practices, very diligent practitioner she is. वो भी सबको, उनको इतना फायदा हो, वो सबको बिठा बिठा के explain करते हैं pranic healing and make sure that for every basic class, advanced, whatever we do in Nashik, she is a great support for us there. Yes, Sangeeta ji. आत्मा नमस्ते मैम। नमस्ते. बोलिए. पहली बार स्क्रीन पे बात कर रही हूँ मैम, लेकिन आपने मोटिवेट किया कि बोला कि इससे लोग और मोटिवेट होंगे, इसलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। मैं माई सेल्फ संगीता अमोल ठोके फ्रॉम नासिक, और मैं 2018 से प्राणिक हीलिंग में हूँ। और बहुत सारे मीन्स हीलिंग वगैरह हम करते हैं नासिक में। हमारा एक सेंटर है खुशहाली चोरडियान, उन्होंने प्राणी शक्ति करके सेंटर अभी खोला है। हम डेली वहाँ पे प्राणिक हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत सारे हीलिंग्स देते हैं। लेकिन रिसेंटली अभी मेरी चाचा और चाची है, उनका उनका बेटा और बहू कनाडा में रहते हैं। उसको प्लासेंटा प्रीविया करके डिटेक्ट हुआ था 4-5 महीने के बाद प्रेगनेंसी में। तो वो क्या होता है कि प्लासेंटा जनरली ऐसा ऑर्गन होता है कि वो सपोर्ट करता है डेवलपिंग फिटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो उसका नॉर्मल मींस पोजीशन अगर फ्रंट और बैक साइड में होगा तो, और अपर साइड पे होगा तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन उसका लोअर साइड पे प्लासेंटा चला गया था। फिर मैंने लीना मैडम और समता मैडम से थोड़ा उनसे गाइडेंस लिया और उसको हीलिंग स्टार्ट कर दिया। फिर हीलिंग के उसको हम एडवांस और वो भी नहीं दे सकते कि क्योंकि बेबी के मीन्स बेबी को जेंटली हीलिंग देना होता है ना, तो इसलिए मैं उसको व्हाइट प्राणा से और मीन्स अल्टरनेट डे हीलिंग देती थी पहले तो। और सब लोग इतने टेंशन में आ गए क्योंकि वहाँ पे मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल सिस्टम थोड़ी हमारे यहाँ के जैसे नहीं होती है। तो वहाँ पे दोनों उनका फर्स्ट बेबी का प्रेगनेंट मीन्स फर्स्ट टाइम था ना, तो वो अक्षदा प्रतीक मेरे उनके बेटे और बहू दोनों डर गए थे। और यहाँ पे भी जो उनके रिलेटिव्स थे वो भी थोड़े पैनिक हो गए। तो फिर मैं अल्टरनेट डे उनको बेसिक प्राणिक हीलिंग देती थी और साइकोथेरेपी देती थी। साइकोथेरेपी से उसका मीन्स पॉजिटिविटी वो अक्षदा यहाँ पे जाती थी ना जॉब पे, तो वो जॉब को उन्होंने ये नहीं किया, स्किप नहीं किया। वो डेली जॉब पे भी जाती थी, सब काम भी करती थी। और बाद में उसकी प्री प्लान डिलीवरी डिसाइड हो गई कि अभी उसको जल्दी डिलीवरी करके डिलीवरी करने को उन्होंने डिसाइड किया। फिर बाद में यहाँ से मेरे चाचा चाची भी वहां पे पहुंचे। लेकिन उसका लास्ट जब मैं हीलिंग करती थी तब मुझे कभी कभी ऐसे ये होता था कि शायद वो प्लासेंटा, मैं उसके साथ बात करती थी कि जे क्योंकि प्लासेंटा के साथ ऐसे जेंटली मूव हो ऐसे, क्योंकि इंटेंशन और मुझे इंटेंशन से और अ, उसको एकदम कैसे एकदम पोला ये हीलिंग देते वक्त इंटेंशन मैंने यूज किया और उसको पोलाइटली हीलिंग दे रही थी कि उसको अच्छी तरह कि उसको एकदम प्यार से हीलिंग देते देते
आफ्टर उसका लास्ट जब ये था सोनोग्राफी, तो वो प्लासेंटा 7-8 महीने के बाद एकदम से ऊपर चला गया उसकी पोजीशन। अगर वो नीचे रहता तो उसको ब्लीडिंग है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने उसका प्री प्लान डिलीवरी के लिए सब ब्लड मीन्स उसको ब्लड देना था, वो सब उसको ठीक से अरेंज कर दिया था। लेकिन वो भी एकदम शॉक हो गए कि उसका प्लासेंटा ऐसे इतने हीलिंग से, हमारे प्राणिक हीलिंग से इतना ऊपर एकदम प्रॉपर पोजीशन पे चला गया। और सब सोल एकदम हैप्पी हो गए क्योंकि सब इतने टेंशन में थे। और इस प्लासेंटा ऊपर जाने से सब सब रिलैक्स हो गए, और ये सब प्राणिक हीलिंग थ्रू ही हुआ। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है मैम, अच्छे अच्छे। मेरे भाई को भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, छोटे भाई को। तो उसको यहाँ पे सब रॉड डाले थे। तो रॉड उसको ऑपरेशन के वक्त हीलिंग दिया, तो वो भी ऑपरेशन अच्छी तरह सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जब 4 वीक के बाद उसका वो रॉड निकालने थे, तो वो बहुत डर गया था। तो उसकी उसके वाइफ ने भी प्राणिक हीलिंग के कोर्सेस किए, लेकिन उसको उसको इतना बिलीव नहीं है। लेकिन उसने अगले दिन मुझे रात को फोन किया कि ताई मेरा ये बहुत ये होगा कल का। सर जब वो राड ऐसे थोड़े से कंजेस्टेड मीन्स बहुत ऐसे ये लगाए हुए थे, तो उसने बोला कि वो मीन्स पेनलेस होना चाहिए सब कुछ। तो फिर मैंने उसको रात को, मैंने और मेरी फ्रेंड है अनुराधा भदाने, हमने उसको हीलिंग दिया। वहां पे बहुत सारा ब्लू प्राणा ये करके उसको बिल्कुल ही मीन्स जब वो रॉड निकाले ना, तो उसको बिल्कुल ही पेन नहीं हुआ। एकदम उसका इतना बिलीव मीन्स विश्वास हो गया प्राणिक हीलिंग पे। तो थैंकफुल इस मीन्स मास्टर ने हमें ये पाथ दिखाया है प्राणिक हीलिंग का। हम रेगुलर ये सब करते हैं, लेकिन लीना मैम और विजय सर ने हमें यहाँ इस पाथ पे ऐसे पकड़ के रखा है। ये दे आर great divine instruments of masters. Thank you, Lina ma'am. Thank you. Thank you so much. I would like you to share that story of kidney stone. या एक मेरी पेशेंट थी, उसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था। 4 mm के दो स्टोन, एक 4.5 mm का स्टोन था और एक 4 mm का स्टोन था। उसका फोन आया कि वो बहुत ये हो रही थी कि पैनिक हो गई थी, उसको कुछ भी ये नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको 2-3 हीलिंग के बाद इंटेंशनली उसको ये किया कि उसको। और प्राणिक हीलिंग में क्या है कि इंटेंशन को बहुत इम्पोर्टेंस है कि हम, बिकॉज एनर्जी फॉलोज द थॉट। मैंने इंटेंशन से उस स्टोन को ये किया कि सिस्टम से मेक इट इन पाउडर फॉर्म एंड फ्लश आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो उसको 3 हीलिंग में वो दोनों स्टोन निकल गए। Wow, amazing. She has lot of stories. है हमने आज we have kept it short so that we can मैम listen मैं to ना different पहली stories. बार स्क्रीन के सामने बोल रही हूँ, तो बहुत इसलिए। अच्छा बोल रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ग्रेट डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। प्राणिक हीलिंग का मूवमेंट नासिक में अच्छा चल रहा है। आप जैसे इतने ब्यूटीफुल सोल सपोर्ट कर रहे हो हमें, इसलिए थैंक तो यू। की वजह से मैम, आपकी और सर की वजह से।